This question it is saying there is a long cylindrical shell which carries positive surface charge sigma in the upper half and negative surface charge minus sigma in the lower half. Then the electric field line around this cylinder will look like. So see, this is a cylinder over here. Upper half is having positive charge over here and lower half is having negative charge. So I know electric field lines are perpendicular to this surface over here. So electric field line will going to start radially from here and it will going to terminate at negative charge like this. It will going to start from positive charge radially and it will going to terminate at negative charge over here. So this will be the electric field. The electric field starting from here will going to go to infinity और वो इन्फिनिटी से इधर नेगेटिव चार्ज पर आकर टर्मिनेट होगी. यहाँ पॉजिटिव से चालू होने वाली इधर नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी और ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी. मतलब कैसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड निकलेगी और यहाँ से पॉजिटिव से निकलने वाली इधर नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी. सो दीज विल बी माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि मुझे ऑप्शन 3 में गिवन है यहाँ पर. तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक यू वेरी मच.